वेल इफ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट जिसने अभी तक लॉ स्प्रिंग चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, या फिर यू आर अ स्टूडेंट जिसको लॉ स्प्रिंग लेसन रिवाइज करना है, यू हैव कम टू द राइट प्लेस. दिस इज फिट द लिट वेयर वी फिट लिटरेचर टू इट्स राइटफुल स्टैंडर्ड, एंड टुडे's सेशन इज अ पार्ट ऑफ सीरीज कॉल्ड धुरंधर. यस, धुरंधर सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं सीबीएसई, एनसीईआरटी, फ्लेमिंगो एंड विस्तास के चैप्टर्स इन 15 मिनट्स. एक सेशन में हम कवर करेंगे एक लेसन, नॉट जस्ट द समरी बट ऑल्सो माइंड मैप, एंड मैं आपको दूंगी अल्ट्रा प्रो टिप्स. तो जहां पे भी आपको दिख जाए ये स्टार, वहां पे आप समझ जाइए वो है आपकी अल्ट्रा प्रो टिप. तो ये स्टार जहां पे भी आपको दिखता है वो है अल्ट्रा प्रो टिप, जो कि आपको करेगी एग्जाम रेडी. So without any further delay, just like that lightning bolt of thunder, let us begin with Lost Spring, where we are going to cover the summary, the mind map, and the pro tips. So first of all, let me give you a brief description of the chapter. The chapter is written by Anis Jung, right? The Lost Spring chapter is actually written by Anis Jung, who is also the narrator, right? She is a writer and also the narrator of the chapter. So वो narrate भी अपनी ही voice में कर रही है chapter. It deals with lost childhood of poor children. So we are going to talk about the poor or underprivileged section of our society, जो कि इतने पुअर हैं कि वो एजुकेशन भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, राइट. टू स्टोरीज आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर. एक है साहेब आलम की स्टोरी, हु इज अ रैग पिकर. रैग पिकर इज अ पर्सन जो कि कूड़ा उठाते हैं, राइट. यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ kids who search in the garbage for the plastics or some valuable items that can be sold, right. तो उसकी स्टोरी है, and he lives in Seemapuri. Mukesh is the second story focuses on the character Mukesh, जो कि कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में, and he is a Bengal. He belongs to a family of bangle makers, right. So this is the brief description of the chapter. लिखा किसने, एनी जंग ने. किसके बारे में है, पुअर चिल्ड्रन के बारे में है, जो कि एजुकेशन भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं. देन टू स्टोरीज आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर्स. एक है साहेब आलम की, द अदर वन इज ऑफ मुकेश, राइट. तो मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, वेयर साहेब आलम इज अ रैग पिकर. अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा हमें याद रखना है, एंड दैट इज कि स्प्रिंग, हमारा टाइटल क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, राइट. So this spring actually refers to the youth, the the childhood or the young period, the youth period of a person's life, right. But it is lost. अब हम वो कैसे समझेंगे कि कैसे वो lost है in these two stories, क्योंकि साहेब आलम एंड मुकेश दे बोथ आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, कि उनको वो चाइल्डहुड जीने के लिए नहीं मिल रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई थ्रू दीज स्टोरीज. So the very first point is on your screen. What is that? Why do you do this? Now this is actually a question that is asked by Annie Jung to Sahib. तो वो साहिब से पूछती है कि तुम ये रैग पिकिंग क्यों करते हो, right? So this is the line. This is actually a question that is asked. The author meets Sahib, a rag picker child. Sahib searches garbage every day. So in the beginning of the chapter हमें क्या बता दिया जाता है, that the author Annie Jung, she actually meets Sahib, right? And Sahib क्या करता है, he searches in the garbage every day. तो of course we know कि वो क्या ढूंढ रहा है, he is searching for something valuable जो कि वो बेच सके, right. And so that he is able to earn some money. The author questions why children do such work. अब यही चीज इस सेंटेंस से पता चलती है, right. This is the question that she asks. So she is trying to analyze कि why children are employed as rag pickers, why they pick or why they search for something valuable in the garbage. क्या वो पढ़ने चाहते नहीं है, या फिर उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है एजुकेशन की. वाई डोंट दे गेट एजुकेटेड एंड एलिवेट देयर स्टेटस. तो वो उनको नहीं समझ में आ रहा है. शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. द चैप्टर बिगिंस विद द आइडिया चाइल्डहुड इज स्टोलन बाय पॉवर्टी. तो स्टार्टिंग में हमें चैप्टर के पता लग जाता है कि साहेब आलम जो एक छोटा सा बच्चा है, ही इज नॉट गेटिंग एजुकेशन. वो पढ़ नहीं रहा है, रादर वो क्या कर रहा है, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहा है. एंड वो लाइवलीहुड कैसे अर्न कर रहा है, बाय सर्चिंग इन द गार्बेज फॉर समथिंग वैल्यूएबल, कि उसको वो आगे चल के कबाड़ी के पास बेच देगा, तो ऑफ कोर्स विल गेट सम मनी. तो उसका चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड इज ऑल अबाउट एंजॉइंग, राइट. एंजॉइंग,
preparing oneself for some career, for some job, for some skill, right? So लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि साहेब जो है वैसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है. Why? Because his options are very limited. क्यों? क्योंकि the family is really poor. Okay. So Seemapuri, we are introduced to Seemapuri. Now, Seemapuri is the place where Saheb lives. Seemapuri is a real place जो कि दिल्ली की पेरिफेरी में है, मतलब आउटस्कर्ट्स पे आती है, right? So Seemapuri is the world of ragpickers. So Seemapuri is the place जहाँ पे कि ज़्यादातर ragpickers की families ही रहती हैं. So we are introduced to this place. Saheb lives in Seemapuri near Delhi. As I said, it is a place in the outskirts of Delhi. Delhi की पेरिफेरी में आता है, right? And Saheb also lives there. Saheb's family lives there. It is a place with no proper house, no sanitation, no clean water. तो ऑफ कोर्स वी नो कि ये जो सीमापुरी है ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कि प्रॉपर कुछ भी नहीं है, ना सीवेज है, ना प्रॉपर सैनिटेशन है, ना प्रॉपर हाउसेस बने हुए हैं. दे आर ऑल्सो लाइक टेम्पररी शैक्स बने हुए हैं, जैसे स्लम एरियाज होते हैं ना, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर. देन नो क्लीन वाटर, तो कोई फैसिलिटी नहीं है एज सच. सो दिस लाइन, this is ultra pro tip number 1. This line can come as it is in your paper. और CBSE पूछती है कि explain this line. What is this line? Seemapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. Why? कि वो है तो एकदम पेरिफेरी में, एकदम कॉर्नर में ही है, जस्ट नेक्स्ट टू दिल्ली है, बट इट इज माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली. क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटीज हमें सिटी में मिलती हैं, those kinds of facilities are absent in Seemapuri. That is why it is distant metaphorically. वैसे तो adjoining है, outskirts पे ही है, periphery पे ही है, but periphery होता क्या है basically? This is a circle, तो ये periphery होता है, right? तो ऑल्दो दिल्ली की पेरिफेरी पे ही है, बट वो माइल्स अवे फ्रॉम इट है. इफ यू टॉक अबाउट द कंडीशंस ऑफ सैनिटेशन, हाइजीन, वाटर एंड द houses that are built, if you talk in these terms, वो miles away from it है, बहुत distant है, वो बिल्कुल दिल्ली जैसा लगता ही नहीं है. So if you go to Seemapuri, you will just find a place जो कि एकदम दिल्ली के जैसा नहीं दिखता. This is what she is trying to say, because of the lack of facilities. Yet the people survive because ragpicking is their only livelihood. So Seemapuri, although it is near Delhi, it does not look like Delhi at all. It does not seem to be a part of Delhi because there is sheer lack of facilities. तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये आता है, राइट? देन बट पीपल आर स्टिल सर्वाइविंग इन सीमापुरी बिकॉज दे हैव नो अदर प्लेस टू लिव. अब उनके पास इतना पैसा है नहीं कि तो दे कैन बाय लैंड, तो वो स्लम एरियाज में ही रहेंगे ऑफ कोर्स. द अदर थिंग इज दैट the only option that is available for them is rag picking, the only means of livelihood जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, इज रैग पिकिंग. वी विल अंडरस्टैंड व्हाई, कि क्यों वो रैग पिकिंग ही कर सकते हैं, राइट? देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल टू देम, नो अदर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल फॉर देम. नाउ वी गेट टू नो द रीजन, राइट? अगेन एक और हमें स्टार वाला दिखा, अल्ट्रा प्रो टिप, राइट? तो साहेब्स full name is actually Saheb-e-Alam. So we are going to dig deeper into his identity, कि what is the background of Saheb, कि ये condition ऐसी क्यों है उनकी family, कितनी poor condition में क्यों रह रहे हैं. So Saheb's full name is Saheb-e-Alam. Saheb-e-Alam means Lord of the Universe, and ironically he owns nothing. So his name Saheb-e-Alam implies that he is Lord of the Universe. So Lord of the Universe must be really prosperous. But ironically enough, यहाँ पे क्या है? He owns nothing. He is a poor child. So this explain the irony of his name. ये question आता है CBSE में, इतनी बार पूछा गया है 2 marker कि I cannot even count, right? So बहुत बार पूछा गया. Then explain the irony in his name. All these questions can come. He came from Bangladesh, Dhaka. So his family is ओरिजिनली अ फार्मर फैमिली. वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. दे बिलोंग टू फार्मर कम्युनिटी. तो बट दे व्हाई दे हैव कम फ्रॉम ढाका, कि वो ढाका से आए क्यों है? बिकॉज देयर फार्म्स वर डिस्ट्रॉयड, देयर फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड
and therefore they had to migrate. तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे आए हैं. ऑफ कोर्स वो कोई लीगल तरीके से तो आए नहीं होंगे. सो वी गेट टू नो दैट दे आर एक्चुअली इलीगल माइग्रेंट्स. ये बात समझ में आई? एंड देयर स्टेटस एज इलीगल माइग्रेंट्स लीव देम विद नो ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब समझ में आया कि वो रैग पिकिंग क्यों कर रहे हैं. वाई दे आर फोर्स्ड फ्रॉम जनरेशन टू गेट देमसेल्व्स इंडल्ज्ड इन द प्रोफेशन और इन द एम्प्लॉयमेंट. प्रोफेशन तो नहीं बोल सकते बट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रैग पिकिंग. क्यों? क्योंकि दे आर इलीगल माइग्रेंट्स. वो लोग आए हैं ढाका से इलीगली बिकॉज देयर फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड. They live on the edge of hunger and need. So of course वहां ढाका में तो they did not have anything to eat as well. तो यहाँ पे वो रैग पिकिंग से कुछ खा तो पा रहे हैं कम से कम, but they are always on the edge of hunger and need. हमेशा उनको मिनिमम में ही सर्वाइव करना पड़ता है. They are just surviving in the bare minimum. कि सर्वाइवल के लिए ही बस वो यहाँ पे हैं, नथिंग एल्स. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दे आर एबल टू अर्न लग्जरी, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे घर बना के रह रहे हैं. नथिंग लाइक दैट. They are just able to survive here. Okay, let us move forward. So garbage is gold. Again, very important thing, each of the slides that I have made is filled with content that CBSE can ask. क्यों? क्योंकि again this statement garbage is gold, दिस स्टेटमेंट हैज टू मीनिंग्स इन द चैप्टर. अब हमें चैप्टर में क्या पता लगता है कि साहेब जो है इज अ रैग पिकर. वी गेट टू नो हिज बैकग्राउंड कि वो कहाँ से आया है. ही हैज कम फ्रॉम ढाका. देन वी गेट टू नो कि वो सीमापुरी में रहता है. सीमापुरी तो एंड वी ऑल्सो गेट टू रीड कि सीमापुरी इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस, स्लम एरिया है. देर इज नो प्रॉपर देर आर नो प्रॉपर फैसिलिटीज एज सच. अब हमें एक और आइडिया इंट्रोड्यूस करती है नरेटर एंड दैट इज द गार्बेज इज गोल्ड. वाई? फॉर रैग पिकर्स दैट इज द एल्डर्स, जो हमारे एल्डर्स हैं उनके लिए तो रैग पिकिंग और गार्बेज इज इक्विवेलेंट टू सर्वाइवल एंड फूड. दैट इज देयर लाइवलीहुड कि दे आर एबल टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट. सो फॉर द एल्डर्स it is the livelihood, it is their livelihood. But for the children and for Saheb, garbage is like gold, right? Garbage is filled with wonders, right? So for Saheb and children, garbage is wrapped in wonder because sometimes they're able to find a 1 rupee coin or something like that, right? So if they find this 1 rupee coin in the hope that they will find this 1 rupee coin someday in the garbage while searching in the garbage, this is why garbage becomes a symbol of wonder for them. कि कभी ना कभी उनको ऐसी कुछ चीज मिलेगी, right? So with the hope that they will find this 1 rupee coin someday in the garbage, they keep on searching the garbage. So this becomes again an ultra pro tip कि ये वाला एक आप जो सेंटेंस है और ये वाला जो एक आपका कोट है, this you should be learning. क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि what does garbage mean for the elders and what does garbage mean for the kids and for Sahib. चलो let us move forward and point number 5. Saheb is at the tea stall. So we get to know कि Saheb belongs to a very poor family. He is not able to have education, right? And he is living in Seemapuri. Then we also get to know that garbage searching is something that is wrapped in wonder for him. But final image that we see Saheb in is actually at the tea stall. तो वो टी स्टॉल में क्या कर रहा है? ही इज एक्चुअली वर्किंग इन द टी स्टॉल. पहले वो क्या करता था? रैग पिकिंग करता था. रैग पिकिंग में ही वाज हिज ओन मास्टर, इजंट इट? कि जब भी वो चाहता था तब जाता था. बट नाउ he is the last image that we are left with is that Saheb leaves rag picking and he starts working at a tea stall. तो लास्ट में वो किसके लिए वर्क करने लग गया? अंडर अ टी स्टॉल. तो ऑफ कोर्स ही हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द मास्टर ऑफ द टी स्टॉल और द owners of the tea stall, isn't it? He earns some money. So although he is able to earn some money, but the author notices he is no longer his own master. So understand
that in the beginning of the chapter we meet this child who is named as Saheb-e-Alam, which implies, lot of the universe. But he was his own master only, although he had nothing, but he was his own master, isn't it? क्योंकि जब वो रैक पिकिंग कर रहा है, he has the freedom to choose when to go and when to not, what to do and what to not. But here, towards the end of the chapter, when we read that he has started working in a tea stall under some person, under the owner of the tea stall, we know that his freedom has completely been lost. Right? His freedom, he has lost his freedom. Carrying a steel canister shows loss of freedom. Again, very important ultra pro tip from this chapter, that this when he is carrying this tea canister, when he is working under someone, that implies loss of freedom, that he has completely lost his freedom. Let us discuss the mind map for the first story. So what is the plot? Let us start with the plot. That Saheb is introduced. Saheb, we know that he is a rag picker, right? Then, of course, we are introduced to the place where he lives, Seemapuri. Then we are introduced to this quote, garbage is gold. And we know that this implies different things for the elders and the children. Then dream of school. Sahib also wants to go to school, but he knows that school is out of his reach. Then tea stall job. Of course, towards the end of the chapter, at the end of the chapter, we know that Sahib has started working for a tea stall, so he has lost his freedom. Who are the key characters? Saheb-e-Alam, the rag picker, and of course Anis Jung, the narrator and the observer. What is the setting? Seemapuri, where this is the place where the rag pickers live, and the poverty, migration, and unemployment. So, what is the backdrop? What we are talking about majorly in this chapter, the poverty that the people in Seemapuri face, the unemployment that they face, and also the migration, the effect of migration that was there on their lives. Then, moving forward, we have the symbolism. Garbage means survival or hope for the elders, and shoes. See, there was this scene with shoes where there are three, four boys. They're talking about having shoes or having a mismatched pair or not wearing shoes. So that actually implies, that particular scene implies dignity, right? Themes. What are the major themes? Lost childhood. We know that Saheb's childhood is lost because he is forced to earn livelihood right from the childhood. Then we have poverty leading to child labor. तो हमें पता है that students, or we know that children like Saheb are forced to work, and they become a classic example of child labor. Exploitation of the poor. Definitely, exploitation of poor is also shown, that the poor are extremely poor. There is a huge economic divide between the rich and the poor, where the poor are becoming even poorer day by day. Then dreams versus reality. So although Sahib has a dream of going to school, but at the end of the chapter we know that he accepts his reality. And what does it show? What incident is there to prove that? He starts working in a tea stall. Rather than waiting to go to school, he starts working in a tea stall. So what was his dream? To go to school, but he accepts his reality, that is working in a tea stall. So let us move forward. So हमारा first part of this chapter is over. First story was Saheb's story.